Hello, dear children. Today we are going to read the poem from your book First Flight, which is written by Caroline Wells. This is a poem which suggests us some of the dangerous way to identify the wild animals. You can see interesting fact here that the poet has treated all the ferocious beasts, all the wild animals with a blend of gentle and weird humor. So, it is easy to make out that the tone of the poem is humorous. Besides humor, he has somewhere used irony too, that we will be discussing in the lines. So, let us start the line by line explanation of the poem. The title of the poem is How to Tell the Wild Animals, and it is written by Caroline Wells. So, the first stanza is, if you ever should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. In this, the poet says that if you get a chance to visit the jungles in the east and you meet a wild animal which is large in size and is little bit yellowish in color. Tawny means yellow in color, means little bit of yellowish color. So if it is of this trait and if it roars on you and you are scared of it, then you should surely make out that it is the Asian lion. यहाँ पे एशियन लायन के ट्रेड्स के बारे में बताया है उन्होंने कि अगर आप ईस्ट के जंगलों को विज़िट करते हो, आप वहाँ पे एक खूब बड़ा सा एनिमल जो कि येलो कलर का होता है दहाड़ते हुए आपके सामने आता है और आप उसके दहाड़ने से डर जाते हो, तो यानी कि it is no other animal than Asian lion. Now the poetic devices which are used here are, in the first two lines only you can see there is no pause at all, means the whole sentence is continued till the word the east, means there is no pause in the form of punctuation mark. So such kind of device is called as enjambment. Now next is, you can see alliteration in the fifth line, you as you are dying. Here Y letter has been prominently used. यहाँ पे Y जो लेटर है वो prominently यूज़ किया गया है, बार बार यूज़ किया गया है, तो इसको alliteration कहेंगे. फिर lion को personify किया गया है, he बोलकर refer किया गया है, so personification का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है. और जो राइमिंग स्कीम होगी हम देखेंगे, चांस को हम अगर ए मार्क करते हैं, ईस्ट को बी, एडवांस को अगेन ए, सिंस चांस एंड एडवांस आर राइमिंग विथ ईच अदर, देन बीस्ट को बी मार्क करेंगे क्योंकि वो ईस्ट से राइम कर रहा है, और लास्ट के जो लाइंस हैं वो आपस में राइम कर रहे हैं, तो उसको हम सी मार्क करेंगे. सो द राइमिंग पैटर्न ऑफ द स्टैंजा इज ए बी सी, and you can see the same pattern in all the stanzas throughout the poem. Second stanza, or if sometime when roaring round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यहाँ पे आप देखोगे जो डिसर्न वर्ड है उसका मतलब हुआ आइडेंटिफाई करना, येलो ग्राउंड का मतलब हुआ येलो बैकग्राउंड. तो फर्दर द पोएट सेज दैट इफ़ यू मीट एन एनिमल which is having a black strips on its yellow body and if he approaches to you to eat, so you must be certain that the tiger which is there in front of you is the Bengal tiger. यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप आगे बढ़ते हो उसी जंगल में और आपको ऐसे एनिमल से मुलाकात होती है जिसके येलो बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स हैं और वो आपको खाने के लिए आगे बढ़ता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एनिमल जो है बंगाल टाइगर है. तो यहाँ पे फिर आप देखोगे कि एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है पहली लाइन में, रोमिंग राउंड में आर जो लेटर है उसका प्रोमिनेंटली यूज़ किया गया है.
उसके बाद फिर आप देखोगे पर्सोनिफिकेशन हुआ है, यहाँ पे टाइगर को ही के रूप में दिखाया गया है। फिर लास्ट वाले जो 2 लाइन्स है वो उसमें कोई भी पॉज आप नहीं देखोगे, किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है, और इस तरह के कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस को क्या कहेंगे, इंजैपमेंट। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा, if strolling forth, a beast you view whose hide with spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. He will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. Strolling forth means walking very carelessly or walking in a very leisure way. So he says that when you are walking somewhere in the jungle and you come to see the animal which has spots on its skin. हाइट का मतलब स्किन होता है, पेपर्ड का मतलब जो स्प्रेड रहता है. तो he says that if you see an animal, one who has spots, lots of spots spread on its skin and it at once leaps on you, वो तुरंत आपके ऊपर जंप करता है और आपको रोल करता है, it means it is the leopard. A tea will do no good to roar with pain means it will roll you in such a frequent manner that you will not get a chance even to make a cry, to make a sound. वो इतने तेज़ी में आपको रोल करेगा, आपके ऊपर जंप करेगा और आपको रोल करता रहेगा. लेप एंड लेप अगेन मीन्स वो आपको नोचता रहेगा, आपको रोल करता रहेगा कि आपको एकदम से मौका नहीं मिलेगा कि आप दर्द से करा हो, यानी यू विल श्योरली डाई एट दैट टाइम. यहाँ पे लेप और लेप जो है ये मिसस्पेल्ड किए गए हैं, ये गलत ढंग से लिखे गए हैं पर्पसली, जानबूझकर, जिससे कि इसमें राइमिंग इसमें जो स्टैंजा में जो राइमिंग इफेक्ट है वो दिया जा सके. नाउ फॉर पोएटिक डिवाइसेस यू कैन सी ही हैज़, यहाँ पे एच लेटर जो है प्रोमिनेंटली यूज़ किया गया है, तो ये भी एलिट्रेशन हुआ. और फिर ही का यूज़ लेपर्ड के लिए यूज़ किया गया है, तो ये भी आपका पर्सोनिफिकेशन हुआ. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. If when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is the bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more cares. In this stanza the poet has said that while you are walking somewhere in your yard and you met with a creature, one who will give you a very tight hug, and that embarrassment will be so hard that you will surely come to know that it is no other creature than the bear. आपको तुरंत पता चल जाएगा जब आपको कोई क्रिएचर आके आपको इतने हार्डली हग करेगा, हार्डली अपने आर्म्स में कैप्चर करेगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो बेयर है. एंड देयर विल बी नो डाउट लेफ्ट, द वे इट विल मेक यू मीन्स इट विल take you so hard in its embracement that you will have no doubts left to recognize it. Now the poetic devices which are used here are your yard. It is given your yard, it means y is prominently used, so it is alliteration. Next, very very, this word is repeated here, so when there is a repetition of a word we call it as repetition only. Next, again the bear has been personified, so you can say that personification is used, and the rhyming pattern will be same as it was in the first one, A B A B C C. Moving to the next stanza. Thou to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodiles you always may tell from hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. Here the poet says that the person, one who is novice, novice means one who is new in any profession, but here he wants to say that the person, one who is new in recognizing the animals, can be confused by seeing certain creatures. And who all are those creatures? The crocodiles and the hyenas. Why? Because of their traits. What are their traits? Hyenas, when they go for attack on their prey, they give a merry smile. Means
in reality they don't give merry smiles, but the expression of their face looks like as if they are smiling. And crocodiles, when they attack on their prey, there comes a water from their eyes, out of their eyes, so it means it shows that they are crying. So the person one who is new in recognizing these traits of these creatures can be confused in identifying them. Now what are the poetic devices which are used here? नॉविस माइट नॉन प्लस, इसमें आप देखोगे एन लेटर जो है इसका रिपीटेशन हुआ है तो इसको एलिट्रेशन कहेंगे. देन इंजैबमेंट का भी यूज़ किया गया है पहले 2 लाइन में, दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, नॉविस माइट नॉन प्लस. यहाँ पे आप देखोगे सेम सेंटेंस जो है सेकेंड लाइन तक कंटिन्यू किया गया है, किसी भी तरह का पंक्चुएशन का पॉज नहीं दिया गया है. Then there's a personification used for hyenas and crocodiles. It is shown as if they give smiles, as if they cry. Plus irony is also used here. Irony in what ways? Means it looks like as if hyenas are passing a smile, but in reality they don't do such things. It is just a simple expression of their face when they go for attack on their prey. ये केवल उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो स्माइल करते हैं, या क्रोकोडाइल्स जो होते हैं अपने शिकार पर हमला करते समय रोते हैं. तो इस तरह का जब कोई स्टेटमेंट जो होता है जिसकी मीनिंग जस्ट अपोजिट निकलती है तो उसको हम आयरनी कहते हैं. देन स्टैंजा, द राइमिंग पैटर्न ऑफ द स्टैंजा इज सेम एज इट इज़ फॉर द प्रीवियस वन. Now the last stanza is the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. Now in the last stanza he has given the traits about the chameleon. It's a creature which looks like a lizard. It's a kind of reptile which looks like a lizard. And what are its trait? It doesn't have any ear and doesn't have any single wing. And if you see it sitting somewhere on the tree and at the next moment only it disappears, it means you should be sure that there is chameleon sitting somewhere on the same place. Why? Because this is the most important trait of the chameleon, that it acquires the color of the place where it sits. Now the poetic devices which are used here are personification, means chameleon has been shown here as human being, he expression has been used, and the rhyming pattern of the poem is AB AB C C. So I hope children you all have understood it. Thank you.